Good morning to all of you. We can start the live discussion. I hope all are well. So, Samir Amaji, very good morning. Very good morning, Ashish ji. Krishna Murthy ji, very good morning. So, we can start the discussion. If you have any question, kindly let me know. I hope all are occupied and busy in the income tax last date of return filing. But we will normally doing the discussion on every day, every week, every Sunday. So that is the reason to come live and do the discussion. If you have the quick question, you may ask. Otherwise, you may leave. Asks the question: is the interest income received from the income tax refund, VAT assessment refund, capital gain bond, and water electricity deposit is also the exempt supply from GST? See, first, if I say the exempt supply, then exempt supply has been given in the notification 12, the exempted by way of notification. In that serial number 27, if I read that serial number 27, then it says that interest on the long-term loan advances, etc. So prima facie, I am of the view that yes, such interest income would be considered as exempt supply. If you have the counter argument, let me know. If you have the counter argument, please let me know. Very good morning, Satyanji. Any other question? Now, please note that while filing the income tax return, make sure that your turnover which has been reported in the GST, and it should match with the turnover which are going to be reported in the income tax. Plus, if there is any reconciliation required, make sure that reconciliation is being prepared now or let's say after that. Why I am saying so? Sometimes you feel that because of the reconciliation, some income are to be reported or not to be reported in the income tax, and which may create the issuance of the notice unnecessary. So you can do the reconciliation, then I would suggest to file the ITR. Is GST applicable on the reimbursement of the property tax paid for the financial? Not at all, sir. Not at all. Ashish, if it is the pure reimbursement which is on the property tax, I can definitely say it is come under the Rule 33, and therefore I am not required to pay the GST at all. Sir, please explain the new changes made in the section 50. See, if I go to the section 50, then it says that if the amount available in the cash ledger, if the amount available in the cash ledger is more than the liability, then to that extent,
you will not create the interest, or you were not liable to pay the interest. Let me again explain. Suppose मेरा टैक्स लाइबिलिटी 1200 का है और मेरे लेजर में 1500 है, और वो 1500 टिल ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द 3B तक अवेलेबल है, और उसमें से मैं यूज करता हूं, डेबिट करता हूं 1200 रुपए. In that case, there is no interest liability. But suppose I have the balance of the 1500, and then subsequently I have taken fund, or I have utilized for some other purpose, and then balance go below, let's say 1000. Let's say my balance is 500 rupees. In that case, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो 500 रुपीज तक लाइबल नहीं होगा, बट उसके ऊपर जो शॉर्टफॉल है 7, उसके ऊपर इंटरेस्ट पेबल होगा. जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है एज ऑफ नाउ, इट इज नॉट लाइक कि आपका 10 दिन तक बैलेंस अवेलेबल था तो 10 दिन पर इंटरेस्ट पे नहीं करना, समथिंग लाइक दैट. बट वी नीड टू एनालाइज फर्दर in the subsequent classes. We are going to have the free discussion on the 53rd GST Council meeting for our platinum and gold and silver educating member. We will discuss for educating member without any charges. We will keep the series of like 4 to 5 days continuously, and we will analyze every circular and the section amendment in detail, but that we will start from August, considering the last date of the ITR. Is the GST payable on the income received under the subvention scheme for the MSME and from RBI? So need to understand what is the subvention scheme. आशीष जी, मुझे ये समझना पड़ेगा ये स्कीम क्या है, तभी मैं आपको आंसर कर पाऊंगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैव जॉइन द एजुकेटिंग मेंबरशिप. तो मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज पोस्ट द क्वेश्चन इन द ग्रुप अलोंग विद व्हाट इज द सबवेंशन स्कीम. ये भी आप मुझे बता दीजिए, तो हम हमारी टीम एनालाइज करके हम लोग रिवर्ट कर देंगे. दैट वी विल रिवर्ट. देयर इज ए लॉट ऑफ अमेंडमेंट already being given in the month of the July. We need to analyze in detail. We have recently launched one course, that is drafting of the GST notice or appeal. We are covering the 20 notices. Charges are very nominal, 5,000. But in that, we have put some condition that on there will be the 2 class on the week, Wednesday and Saturday. In the Wednesday, let's say I have given one notice, I will explain that notice, and then you need to prepare the draft reply according to your thought and need to submit prior to Saturday. I will analyze and then I will discuss in the Saturday. Agar aap, if you not able to give the draft reply, you will not be able to attend the subsequent classes. और अगर आप क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो उस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी और आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा. वट एवर द प्रोपोर्शनेट, जितनी नंबर ऑफ क्लासेस हो चुकी है वो जो भी प्रोपोर्शनेट है वो रिफंड कर दिया जाएगा. What is the main purpose for this course? The main purpose of this course is to enhance your skill. Enhance your skill. अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, I am ready to refund the amount, no problem at all. But serious candidate ही और serious participant इस batch में चाहिए. Any updation for the royalty? Yes, ma'am. It has been confirmed that royalty is not the tax, so it means royalty is a service and it will be liable under RCM. So in that case, it would be liable under RCM. So need to pay the tax under RCM. So there was a question that whether royalty is a tax or royalty is in service. So finally, the Supreme Court 9 bench has given the verdict that royalty is not a tax. It is a service. So therefore, it would be liable under RCM in my view. Any other question? Today discussion we will keep only for half an hour, that we always do.
The discussion would be only for half an hour. And if you would be interested to join the educating membership, you all know that we are running the 3 types of the membership: gold, silver, and platinum. In the silver, I can quickly say that we are handling the day-to-day query. In the gold, we are handling the day-to-day query as well as 5 GST notices per annum. You can share the draft reply and we will review the same and add our fact. And last, platinum, in this day-to-day handling the queries plus 5 notices per annum plus the 60 hours GST certificate course which I am providing, that will be added to your login without any cost. This recording would be updated twice after 6 months. So you can enjoy the multiple, there is no limit at all. You can see the multiple times recording, and then when you renew the platinum membership, you are allowed to join one live batch. Apart from that, we are having the PF membership, income tax membership only for the query handling. So along with that, in all the 3 membership, we are providing the daily alert, daily GST newsletter, whatever. So monthly newsletter, daily alert. Daily alert means whatever the changes are there in the day. So we are updating, we are adding the case flow, and whatever the amendment in the provisions, circular, etc., we are updating, as well as we are providing one practical problem / article / high court judgment ka analysis. So these would help you enhancing the knowledge. If you are interested, you can join our educating membership. You can inquire on these number 8178908220 or 8920931648. So I hope there is no more question. That I can say the reverse charge mechanism. Make sure that your client, if RCM is not paid and supplier is unregistered, the first biggest benefit that I can say that you can take the ITC. I do agree, you need to discharge the interest, but you can take the input tax credit. Second point, if the supplier is related or distinct person, then you can enjoy the benefit of Circular 199 read with Rule 28 Sub-Rule 1. Sub-Rule 1 का second proviso says that in case of the related party, any value declared on the invoice will be deemed to be the open market value. So let's say I have taken certain services from outside India, from my related organization, from my related party. In that case, if I am eligible for full input tax credit, I can put any value and that value will be deemed to be the open market value. And why I have linked with the Circular 199, because Circular 199 says that, any value declared to be the open market value would include zero also. What does it mean? It means suppose I have not made the invoice at all, and can I say that the zero value will be considered as open market value and no invoice will be considered as deemed invoice? Answer would be yes. They have clarified after the 53rd GST Council meeting that yes, you can take the advantage of the Circular 199 that I'm using, because zero value will also be deemed to be the open market value and you can take the benefit of the proviso if you are related party or distinct person. Mahinder ji, hello, कैसे हैं? Any other question? Let me ask one question to all. Whether e-commerce operator, whether supplier, unregistered person can make a supply of the service through e-commerce operator within the state? मैं repeat करता हूं, क्या supplier of service unregistered है, बट क्या वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सप्लाई कर सकता है सर्विस की within the state and outside the state? बोथ की बात कर रहा हूं. Assuming that service is not come under 9(5), that service is liable under, that service does not come under 9(5), that means e-commerce operator is liable under section 52. TCS वो कलेक्ट करता है. अगर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं
क्या मैं सर्विस के सप्लाई कर सकता हूं विद इन द स्टेट, आउटसाइड दैट स्टेट थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर विदाउट टेकिंग द जीएसटी रजिस्ट्रेशन? दैट इज माय क्वेश्चन. I need to know the RCM is applicable on the CS services received under unregistered GST. Answer is no. महेंद्र जी, अगर सप्लायर चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो अनरजिस्टर्ड है एंड ही इज गिविंग द सर्विस टू मी, आई एम रजिस्टर्ड, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, because reverse charge is applicable only for the category which has been notified. तो अगर मैं कंसल्टेंसी की बात करूं, if this consultancy has been received from the advocate, firm of the advocate or individual advocate or senior advocate, I can say it will come under RCM. But अगर supplier other than advocate है और अगर वो कुछ भी सर्विस दे रहा है, लीगल सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस, it will not come under RCM. तो अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो टैक्स इनवॉइस इश्यू करेंगे बाय चार्जिंग द जीएसटी. अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो कोई भी लाइबिलिटी मेरे ऊपर नहीं आएगी. I hope you are talking about 9 subsection 3. I hope you are not talking about 9 subsection 4, क्योंकि 9(4) जो बिल्डर के ऊपर एप्लीकेबल है उसमें वो 80-20 का एक रेशियो है. उस रेशियो में तो फॉल कर जाएगा, बट नॉर्मली इट विल नॉट फॉल. राजेंद्र जी, थैंक यू सो मच. आशीष जी, राजेंद्र जी, as per the new section for the firm 10 number compulsory for the firm for the TDS on the remuneration salary. Okay. मुझे ओके राजेंद्र जी, मुझे ज्यादा इनकम टैक्स का आइडिया तो नहीं है, बट स्टिल नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क द क्वेश्चन. अगर वो जीएसटी से रिलेटेड क्वेरीज है तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द रिप्लाई. अभी तक आप लोगों ने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया. क्या unregistered service provider can make the supply through e-commerce operator without taking the GST registration till 20 lakh? वो इंट्रास्टेट भी सप्लाई कर रहा है और इंटरस्टेट भी सप्लाई कर रहा है. What would be your answer? But Rajendra ji, you can ask the question if it is related to GST. अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगता है तो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन, click on the subscribe button and share with the maximum people you can. Share with the maximum people you can. Any other question if you have, kindly ask the question. Answer would be yes. He can make the supply of the service through issue till turnover does not cross threshold limit. सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. गुड्स अगर है तो विद इन स्टेट कर सकता है, बट आउटसाइड दैट स्टेट इज नॉट पॉसिबल. महेंद्र जी का क्वेश्चन है कि जीएसटी नोटिस हैज बीन इशूड इन 2A 3B ऑन द टैक्स लाइबिलिटी बट एक्चुअल 2A इज मोर देन द आईटीसी कंपैरिजन शीट. सबसे पहले महेंद्र जी, टेल मी दैट इट इज फॉर विच फाइनेंशियल ईयर. बट इन एडिशन टू दैट आई कैन से दैट अगर 2A 3B में डिफरेंस है और आप कह रहे हैं 2A ज्यादा है, तो काइंडली गिव द रिप्लाई
by showing that in totality the 2A is more than, so we have not taken the more ITC, whether we have taken the less ITC, no problem at all. And assuming महेंद्र जी, अगर ये क्वेश्चन, अगर ये नोटिस आपका 17-18 का है, 9th of October 2019 के पहले का है, you may have the beneficial circular 183 which you can use, or you may also use circular 193 जो कि subsequent period का है. एंड एक बात और, अगर आपने जैसे कहा कि 20-21 फाइनेंशियल ईयर का है तो 183 193 विल नॉट हेल्प, बट 20-21 के लिए देखो पहला पॉइंट क्या हुआ कि आप उस नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं बाय सेइंग दैट दैट वे इज मोर. सेकंड पॉइंट आप रिप्लाई कीजिएगा, आप उन्हें कहिएगा 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज डबल ए वाज मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2022, मतलब 1 Jan 22 से ये सेक्शन इंप्लीमेंट हुआ है, इफेक्टिव हुआ है. तो यू कैन से दैट देयर, जो कि क्या बात करता है, दैट आईटीसी यू कैन टेक अप टू 2B. So prior to that, because there is no availability of the section, requirement of the section, so there is no compulsion on the SSC to do the compliances. थर्ड पॉइंट आप ये कह सकते हैं, फाइनेंस एक्ट 2022 जो कि इफेक्टिव हुआ 1 अक्टूबर 2022 से, then you can say that because this finance act was made effective from 1 October 22 and which has omitted the two-way communication. Remember that initially we have the GSTR1, GSTR2, GSTR3, which was never available on the GST portal, but yes, in the law it was there till 30th September 2022. तो मेरा ये कहना है महेंद्र जी कि टिल दैट 30th September 2022 तक अगर ये नोटिस आता है तो आप हमेशा ऐसे नोटिस का रिप्लाई कीजिए बाय सेइंग दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट इन द लॉ, there was no non-availability in the portal but requirement in the law, so therefore not possible to compliance, so you can give the reply accordingly. और अगर आप हमारे गोल्ड मेंबर हैं या प्लेटिनम मेंबर हैं तो आप अपने हिसाब से ड्राफ्ट रिप्लाई तैयार कर लीजिए एंड काइंडली शेयर विद मी एंड आई विल रिव्यू, माय टीम विल ऐड रिलेवेंट फैक्ट इन योर नोटिस टू स्ट्रेंथन द नोटिस. We are charging only 5,000 for silver membership, 10,000 for gold and 15,000 for platinum. In gold and platinum, we are providing the support in the GST notice, 5 GST notice per annum, not more than that. तो आप हमें हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके उस बेनिफिट, उसका भी बेनिफिट आप एंजॉय कर सकते हैं टू सपोर्ट इन द जीएसटी नोटिस का रिप्लाई. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर, माय टीम विल रीच विद यू, or you can visit my website www.educating.com and you can call to my team member. So let me share the contact number with you once again. So this is the contact number of my team, 8178908220 8902093168. So you can visit my website also meanwhile to understand what is the membership at all, the platinum or the gold, because in the two categories of the membership we are handling the GST notice. Like if you go to the gold, the charges are 5,000 for silver, 10 for gold and 15 for platinum membership, and discount is 10%. You can understand meanwhile that what are the support we are providing. Okay, so thank you, and over to you for asking any question. And let me see the question of Ashish ji. Every license renewal fees is exempted or GST is payable. So what about the limit of rupees 5,000? पहला, अगर मैं बात करूं कोई भी गवर्नमेंट सर्विस जो 5,000 रुपए तक की है उसके ऊपर तो कोई टैक्स है ही नहीं, that will be exempted always. गवर्नमेंट सर्विस की बात कर रहा हूं, because there is an exemption, respective exemption in the 12/2017 exemption notification that up to 5,000 you are not required to pay the GST because it is exempted. Now more than 5,000 रुपए है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी और कैटेगरी में वो एग्जेम्प्ट है या नहीं है. जैसे मैं बात करता हूं सेफ्टी लाइसेंस की, शायद फायर एक ऐसा पॉल्यूशन का कोई लाइसेंस है या फायर का कोई लाइसेंस है, यू कैन बॉयलर से रिलेटेड अगर आपका बिजनेस है, देन यू हैव टू टेक द प्रोटेक्शन लाइसेंस और प्रोटेक्शन फीस यू हैव टू पे, तो वो भी आपका सेपरेट कैटेगरी में वो एग्जेम्प्टेड है. एज्यूमिंग if the service is exempted in any of the clause, then I can say
then I can say it is not fall under RCM because service itself would be exempted. Otherwise, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज. Is it clear? महेंद्र जी, अगर आपका क्वेश्चन आंसर हो गया तो प्लीज कंफर्म करें. Everyone whose question is being answered by me, kindly confirm in the chat or raise the counter question if it is not being properly answered or still you need the more clarity. You can raise the counter question. हैप्पी कुमार वर्मा जी, अगर डीलर स्कीम को पीएल में डेबिट नोट और अदर इनकम में दिखाया क्योंकि मुझे फाइनेंशियल क्रेडिट नोट मिला तो क्या उस पर आउटपुट जीएसटी देना पड़ेगा? मेरे हिसाब से नहीं. देखो, पहला बात वर्मा जी, पहला बात ये हुआ कि अगर कोई मुझे इनकम रिसीव होती है, इट डजंट मीन आई हैव टू पे द जीएसटी ऑलवेज. नो, ऐसा नहीं है. पहले मुझे ये देखना पड़ेगा क्या मैंने कोई सप्लाई की है, बिकॉज फॉर गेटिंग द इंसेंटिव और गेटिंग द सम स्कीम, सप्लायर जीएसटी का क्रेडिट नोट नहीं दे पा रहा है बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द कंडीशन given in the GST law. Like one example, 15 subsection 3 clause B says that it should be linked to the relevant invoices and there has to be the agreement on or before the supply. Suppose वो agreement नहीं था, तो मुझे जो supplier है, जो company है, वो मुझे हमेशा financial credit note देगी, but there is no supply made by me to that company for which they are giving the consideration. Answer is no. There is no supply at all. So उस केस में उसके ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी कभी नहीं आएगी. एक और पॉइंट है वर्मा जी, शायद आपको हेल्प करेगा. अगर आपने उस इंसेंटिव का, उस डिस्काउंट का, उस बेनिफिट का यूज करते हुए अगर आपने अल्टीमेट सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दिया, उस केस में ये टैक्सेबल बन जाएगा. तो मैंने आपको दो बात कही. नॉर्मली फाइनेंशियल क्रेडिट नोट विल नेवर क्रिएट द लाइबिलिटी, बट इन वन केस इट विल लाइबल टू द जीएसटी. वो कौन सा केस है? अगर मैंने अपनी अल्टीमेट सेलिंग प्राइस को अगर मैंने रिड्यूस कर दिया. क्यों रिड्यूस किया? बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट, बिकॉज ऑफ दिस इंसेंटिव, देन आई कैन से यस, इट वुड बी लाइबल, नॉट बिकॉज इट इज ए सप्लाई but because it will be treated as consideration given in the GST. This is my view. If you not agree, then kindly raise your counter question, counter argument. Otherwise, I can take up one more question. Then we have to conclude our live discussion. We will meet again on next Sunday. Ashish ji, so sir, in that case, whether we can avail the ITC, the service taken from the government for the past period, assuming that government department, no problem. देखो, रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अंडर आरसीएम कभी नहीं होगा. रजिस्ट्रेशन तो कोई भी कैटेगरी में हो सकता है, बट आरसीएम कोई कैटेगरी नहीं है. मतलब वो रेगुलर कैटेगरी के रूप में रजिस्ट्रेशन होता है. अगर मान लो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, मुझे टैक्स पे करना था, तो आपने, आशीष जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप उस क्लैरिफिकेशन जो अभी आरसीएम के रिगार्डिंग इश्यू है, यू कैन टेक द एडवांटेज दैट यू पे द टैक्स राइट नाउ फॉर इवन फॉर पर्टेनिंग टू द पास्ट पीरियड एंड टेक द आईटीसी. इंटरेस्ट की लाइबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप सेल्फ इनवॉइस आज की तारीख में बना लो. कृष्ण गुप्ता जी, आई एम परचेजिंग द गुड्स, सप्लायर इश्यू द क्रेडिट नोट एज इंसेंटिव टू बी गिवन टू माय कस्टमर, जीएसटी लाइबिलिटी. Answer is again Krishna Gupta ji, same question I have explained. If it is a financial credit note, no GST का liability in the hand of recipient. Only in one case it may create the liability. अगर आपका कस्टमर उस सपोर्ट के कारण अपना जो अल्टीमेट सेलिंग प्राइस है उसको अगर रिड्यूस कर देता ना, उस केस में वो इंसेंटिव जो उसको रिसीव हुआ है, इट विल बी एडेड इन द आउटवर्ड सप्लाई बिकॉज ऑफ कंसिडरेशन का डेफिनेशन. And one more point I like to add, because of the section 15 subsection 2 and clause E के कारण. Last question for the day, वर्मा जी, it means जीपी निकालना चाहे अगर वो कम ही क्यों ना हो नेट प्रॉफिट से, इट मीन जीपी पॉजिटिव होना चाहिए. नहीं, जीपी का मैंने कोई पॉइंट ही नहीं बताया सर, ग्रॉस प्रॉफिट का पॉइंट ही नहीं बताया. आप तो नॉर्मल मार्केट में
किस प्राइस में सेल करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट इंसेंटिव क्या आपने प्राइस कम की है, अगर ऐसा केस है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज नॉट टू बी एडेड। वेदर माई ग्रॉस प्रॉफिट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डजंट मैटर एट ऑल, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा मानना है। इसी के साथ आज हम लाइव डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव डिस्कशन। वी विल डू अगेन ऑन नेक्स्ट संडे एट 11 AM. If you have any question, we are happy. And most probably on the next Sunday, we will start our quiz for free to all. That point we will start, and we will distribute how to use that benefit, how to give the exams. That all we will start. I will explain. प्राइस कम कैसे माना जाएगा? तो वर्मा जी, लेट्स से मैं एक सीमेंट का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं नॉर्मली सेल करता हूं सीमेंट को ₹120 में, बट बिकॉज ऑफ द इंसेंटिव 10 रुपीज पर सीमेंट बैग का मुझे 10 रुपीज पर इंसेंटिव मिलता है, तो मैंने अपनी सेलिंग प्राइस को 120 की जगह 110 कर दिया, कुछ भी कर दिया, इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज कि प्राइस कम हो गया। Syllabus for the quiz and everything, it will be explained. It would be recent update in the GST. It will be recent update in the GST. That would be the theme. Probably that the first I will start with the 53rd GST Council meeting. तो आप एक वीक तक तैयारी कर सकते हैं 53rd GST Council meeting का, and then I will keep one quiz having the 20 question free to all. On the next Sunday I will announce, and then you can give the exams. परचेस प्राइस से ऊपर होना चाहिए, नहीं, नॉर्मल मार्केट प्राइस से ऊपर होना चाहिए या नॉर्मल मार्केट प्राइस के बराबर होना चाहिए। देखो, प्राइस तो परचेस प्राइस के ऊपर हमेशा होगा, लॉस में तो कोई सेल करता नहीं है नॉर्मली, अनलेस एंड अनटिल वो आउटडेटेड हो जाए। बट अगर मैं नॉर्मली सपोज मार्जिन करता हूं 10%, बट बिकॉज ऑफ दैट इंसेंटिव आई एम मेकिंग द मार्जिन ओनली 1%, लेट्स से, तो फिर उस केस में मुझे वो अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। फाइन, एक बार कंफर्म करें सो दैट वी कैन कंप्लीट द लाइव डिस्कशन। Thank you very much. Goodbye to all of you. We will meet on the next Sunday. विजय अजमेरा जी, जीएसटी कैश लेजर इज नॉट एप्लीकेबल, इंटरेस्ट कब से एप्लीकेबल है? जीएसटी कैश इन द लेजर नॉट एप्लीकेबल, इंटरेस्ट कब से एप्लीकेबल है? रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, एक बार फाइनेंस बिल को 2024 को नोटिफाई होने दीजिए, बट इट वुड बी रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल, मतलब 1 जुलाई 2017 से। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट संडे and make sure to attend the live discussion because I am going to announce the quiz wala part also on the next Sunday. Thank you.